आज की इस फोर्थ वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये टॉपिक करेंगे कि भाई कैटेगरी ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, व्हाट इज़ एपीआई लेवल, गूगल प्ले, एंड्रॉयड मार्केट प्लेस, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर स्मार्टफोन, ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, सेटिंग एंड्रॉयड इन एंड्रॉयड स्टूडियो एंड सेटिंग एंड्रॉयड इन एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस वेलकम करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अर्निंग पे। अगर तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अर्निंग पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें हमारे यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने में ज़्यादा टाइम ना लगे और हम अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और आई होप सो आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। Category of Android application. There are many Android applications in the market. The top category are music, sports, travel, business, social media, news, lifestyle, weather, references, utilities, multimedia, food and drink, books, navigation and finance. अब व्हाट इज एपीआई लेवल? एपीआई लेवल क्या होती है? एपीआई लेवल इज एन इंटीजर वैल्यू जो यूनिकली आइडेंटिफाइज द फ्रेमवर्क ऑफर्स बाय Android of the Android platform. API level is the number that shows the Android version's name and is increased with each version. Each Android platform version supports exactly one API level, although support is implicit for all earlier API levels down to API 1. Current API level is 31 for Android 12 version. ठीक है. When choosing an API level, two things are considered: current distribution, how many devices can actually support my application. Choosing a lower API that may support more devices but again less functionality for your Google Play Android Marketplace. Marketplace offered by the Google where programmers can offer their Android applications to Android user. Customers use the Android Google Play application to buy, and Google Play also hardware and software role hardware requirement for smartphone app development. एंड्रॉयड ओएस मिनिमम 4 GB ऑफ रैम, 8 GB, ठीक है, 4 GB से 8 GB होना चाहिए मिनिमम। कोर i3 प्रोसेसर 5th जनरेशन होना चाहिए मिनिमम। रिक्वायर्ड JDK वर्जन जावा डेवलपमेंट किट JDK 8 होना चाहिए मिनिमम। स्क्रीन रेजोल्यूशन 1280 से लेकर 1280x800 रेजोल्यूशन होना चाहिए। 2 GB ऑफ अवेलेबल डिस्क स्पेस मिनिमम। 4 GB होना चाहिए, ठीक है। Recommendation 500 MB for ID plus 1.5 GB for Android SDK and emulator system image. Apple iOS अगर आपके पास है तो उसके लिए ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। एटलीस्ट एन Intel i5 और i7 equivalent CPU, minimum 8 GB RAM and 200 GB of disk space. अब setting up of Android Studio in your PC or system. The standard ID for Android application development is Android Studio. Android Studio is based on IntelliJ IDEA. Android Studio installation should include Android SDK, the latest version of the Android SDK. Android SDK 4.1 works fine. Android SDK tools and platforms tools for debugging and testing apps. A system image for Android emulator lets you create and test your apps on virtual devices. Installing tools: download and install Android Studio from https://developer.android.com/studio। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हैं। आपने इसको कैसे सेट करना है, क्या करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, A to Z आपको गाइड किया जा रहा है। आपने जस्ट वीडियो को पॉज करके इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। मैं अभी कुछ बताऊंगा नहीं, आपने जस्ट इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तमाम जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक करें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।